Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss productivity of ecosystem, food chain, trophic level and food web. Productivity of an ecosystem, the rate at which food is manufactured by producers in unit area and unit time is called productivity. There are following types of productivity. First is primary productivity, second is secondary productivity. वो रेट जिस पर यूनिट एरिया और यूनिट टाइम में प्रोड्यूसर से खुराक पैदा होती है प्रोडक्टिविटी कहलाता है। प्रोडक्टिविटी की दर्ज झैल अक़साम है। नंबर 1 प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 secondary productivity. Primary productivity, the rate at which solar energy is converted into organic energy by green plants or total food assimilation rate of producers is called primary productivity. Primary productivity can be measured in grams of carbohydrates produced per unit area of land surface per year. Primary productivity is of two types. First is gross primary productivity, second is net primary productivity. वो रेट जिस पर ग्रीन प्लांट्स से सोलर एनर्जी ऑर्गेनिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है या प्रोड्यूसर्स का टोटल फूड असिमिलेशन रेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को पर ईयर लैंड के पर यूनिट एरिया पर पैदा करदा कार्बोहाइड्रेट्स की मिकदार की सूरत में मेजर किया जा सकता है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की दो टाइप्स हैं। नंबर 1 ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द टोटल रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस or the total amount of organic matter fixed is called gross primary productivity. It also includes the organic matter used up in plant respiration. फोटोसिंथेसिस का टोटल रेट या टोटल फिक्स करदा ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। इसमें वो ऑर्गेनिक मैटर भी शामिल है जो कि प्लांट रेस्पिरेशन के दौरान यूज़ होता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, द ऑर्गेनिक मैटर स्टोर्ड इन प्लांट टिश्यूज इज कॉल्ड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। द ऑर्गेनिक मैटर यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। इट इज़ द फूड अवेलेबल टू द कंज्यूमर्स। Relationship between the two types of productivity may be well understood by the following equations. Gross primary productivity is equal to photosynthesis plus respiration, while net primary productivity is equal to gross primary productivity minus respiration. प्लांट टिश्यूज़ में स्टोर्ड होने वाला ऑर्गेनिक मैटर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाता है। इसकी कैलकुलेशन में रेस्पिरेशन के दौरान कंज्यूम होने वाले ऑर्गेनिक मैटर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ये वो फूड होती है जो कंज्यूमर्स को अवेलेबल होती है। ग्रॉस और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मंदरजा झैल इक्वेशंस के ज़रिए से समझा जा सकता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर है फोटोसिंथेसिस प्लस रेस्पिरेशन, जबकि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बराबर है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल टू अदर ट्रॉफिक लेवल, दैट इज द heterotrophs और द कंज्यूमर्स इज कॉल्ड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एनर्जी की वो मिकदार
जो अगले ट्रॉफिक लेवल यानी कि हिटोट्रॉफ्स या कंज्यूमर्स को मुहैया हो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहलाती है। Dear students, here we can see primary and secondary productivity. In primary productivity, gross primary productivity is equal to photosynthesis plus respiration, while net primary productivity is equal to gross primary productivity minus respiration, while secondary productivity is the amount of energy available to other trophic level, that is the heterotrophs or consumers. Food chain, the sequence of organisms through which energy moves in an ecosystem is called food chain. For example, plants are eaten by herbivores and the herbivores are eaten by the carnivores. Thus, the food manufactured by plants, which are producers, travel from producers to herbivores and from herbivores to carnivores. Food chain has following types. First is grazing food chain, second is parasitic food chain, third is saprophytic food chain. जानदारों का सीक्वेंस जिसके ज़रिए से एक इकोसिस्टम में एनर्जी मूव होती है फूड चेन कहलाता है। मिसाल के तौर पर प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं और हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। इस तरह जो खुराक प्लांट्स यानी प्रोड्यूसर्स ने तैयार की वो प्रोड्यूसर से हर्बीवोर को ट्रैवल करती है और हर्बीवोर्स से कार्निवोर्स को। फूड चेन की मंदरजा झैल टाइप्स हैं। नंबर 1 ग्रेजिंग फूड चेन, नंबर 2 पैरासाइटिक फूड चेन, नंबर 3 सैप्रोफिटिक फूड चेन। Grazing food chain, it is found in terrestrial ecosystem or freshwater ecosystem. It has plants or photosynthetic algae at the base. It goes from smaller to larger animals. Grazing food chain may be of three types. First is grassland food chain, second is open forest food chain, third is freshwater ecosystem food chain. ग्रेजिंग फूड चेन टेरेस्ट्रियल और इक्वेटिक इकोसिस्टम में पाई जाती है। इसकी बेस पर प्लांट्स या फोटोसिंथेटिक अलजी पाई जाती हैं। ये स्मॉलर से लार्जर एनिमल्स की तरफ जाती है। ग्रेजिंग फूड चेन की 3 टाइप्स हो सकती हैं। नंबर 1 ग्रासलैंड फूड चेन, नंबर 2 ओपन फॉरेस्ट फूड चेन, नंबर 3 फ्रेश वाटर इकोसिस्टम फूड चेन। ग्रासलैंड फूड चेन, द फूड चेन ऑफ ग्रेजिंग इकोसिस्टम consists of grasses, grasshopper, frog, snake and owl. Open forest food chain, the food chain of open forest consists of trees, deer and lion. Freshwater ecosystem food chain, the food chain of freshwater ecosystem consists of algae, water fleas, small fish, large fish and a fish eating animal, bird or man. ग्रासलैंड फूड चेन से मुराद ग्रेजिंग इकोसिस्टम की वो फूड चेन है जो कि ग्रासेस, ग्रास हापर, फ्रॉग, स्नेक और ओल पर मुश्तमिल होती है। ओपन फॉरेस्ट फूड चेन ट्रीज, डियर और लायन पर मुश्तमिल होती है, जबकि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम फूड चेन अलजी, वाटर फ्लीज, स्मॉल फिश, लार्ज फिश और फिश ईटिंग एनिमल, बर्ड या मैन पर मुश्तमिल होती है। पैरासाइटिक फूड चेन, it goes from larger to smaller organism. In this case, parasites of different types are involved. Large varieties of fungi, bacteria and other parasites obtain food from their host. The host may be
an animal or a plant. Saprophytic or detritus food chain. It is a type of food chain in which decomposers like fungi and bacteria attack on dead remains of plants and animals to obtain food. पैरासाइटिक फूड चेन लार्जर से स्मॉलर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाती है। इस केस में मुख्तलिफ टाइप्स के पैरासाइट्स इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सी वैरायटीज़ की फंजाई, बैक्टीरिया और दूसरे पैरासाइट्स अपने होस्ट से खुराक हासिल करते हैं। होस्ट एक एनिमल या प्लांट हो सकता है। सैप्रोफिटिक या डेट्राइटस फूड चेन ऐसी फूड चेन है जिसमें डीकम्पोजर्स जैसा कि फंजाई और बैक्टीरिया खुराक हासिल करने के लिए प्लांट्स या एनिमल्स के डेड रिमेन्स पर अटैक करते हैं। Dear students, here we can see land and aquatic food chains. Here we can also see different food chains. First, a 3-linked food chain, second, a 4-linked food chain, and third, which is a 5-linked food chain. Trophic level. Each trophic level in the food chain in a natural community is called a trophic level. There are different trophic levels like first trophic level, second trophic level, third trophic level, fourth trophic level. Some animals can eat plants as well as animals. Therefore, they are called as omnivores. Thus, they occupy more than one trophic level in food chain. नेचुरल कम्युनिटी में फूड चेन में हर लेवल ट्रॉफिक लेवल कहलाता है। ट्रॉफिक लेवल्स मुख्तलिफ तरह के होते हैं, जैसा कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल और फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। कुछ एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खा सकते हैं, इसलिए इनको ओमनिवोर्स कहते हैं। इसलिए ये फूड चेन में एक से ज़्यादा ट्रॉफिक लेवल में पाए जाते हैं। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, द ग्रीन प्लांट्स ऑक्यूपाई द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल और प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल। सेकंड ट्रॉफिक लेवल, प्लांट ईटर्स which are called herbivores form the second trophic level or primary consumer level. Third trophic level, carnivores that eat the herbivores form the third trophic or secondary consumer level. Fourth trophic level, this trophic level is composed of tertiary consumers. Green plants फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल या प्राइमरी प्रोड्यूसर लेवल को ऑक्यूपाई करते हैं। हर्बीवोर्स सेकंड ट्रॉफिक लेवल या प्राइमरी कंज्यूमर लेवल बनाते हैं। कार्निवोर्स जो कि हर्बीवोर्स को खाते हैं, थर्ड ट्रॉफिक लेवल या सेकेंडरी कंज्यूमर लेवल बनाते हैं। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल टर्शरी कंज्यूमर पर मुश्तमिल होता है। Dear students, here we can see energy flow and trophic levels. Producers form first trophic level, herbivores form second trophic level, small carnivores form third trophic level, and large carnivores form fourth trophic level. Food web. The combination of different food chains is called food web. Food chain is a natural condition. Different food chains are interconnected with each other. It forms alternative source of food called food web. Food web forms an interlocking pattern with each other through different trophic levels. मुख्तलिफ फूड चेन्स का कम्बिनेशन फूड वेब कहलाता है। फूड चेन नेचुरल कंडीशन होती है। डिफरेंट फूड चेन्स एक दूसरे के साथ
इंटरकनेक्टेड होती हैं और ये खुराक का अल्टरनेटिव सोर्स बनाती हैं, जिसे फूड वेब कहते हैं। फूड वेब डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ज़रिए से एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग पैटर्न बनाती है। Food webs are very important for maintaining the balance in nature. For example, in grazing food chain of grassland, grass may be eaten by mouse. The mouse may be eaten directly by the snake or hawk. The snake may also be eaten by hawk. Similarly, grass may also be eaten by grasshopper. Grasshopper is eaten by frog and frog is eaten by snake. फूड वेब्स नेचर में बैलेंस मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। मिसाल के तौर पर ग्रासलैंड की ग्रेजिंग फूड चेन में घास को माउस खा सकता है और माउस को डायरेक्टली स्नेक या हॉक खा सकता है और स्नेक को हॉक खा सकता है। इसी तरह से घास को ग्रास हॉपर खा सकता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खाता है और फ्रॉग को स्नेक खाता है। Dear students, here we can see a food web which is a combination of different food chains. Advantages of food web. There are varieties of pathways in a food web. These pathways maintain the stability of ecosystem. For example, owl preys on rabbit and mice. It reduces rabbit population and fewer plants are consumed. The larger plant population produces more fruits and seeds. Thus, these plants support a larger mice population. The increased number of mice becomes the major source for the owls. The rabbit population gradually increases and these primary consumers again become a food source for the owls. Thus, nature maintains a balance. फूड वेब में बहुत सी तरह के पाथवेज हैं। ये पाथवेज इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करते हैं। मिसाल के तौर पर ओल रैबिट और माइस का शिकार करता है। रैबिट के शिकार करने पर रैबिट की पॉपुलेशन कम हो जाती है और इस तरह कम तादाद में प्लांट्स कंज्यूम होते हैं। लार्जर प्लांट पॉपुलेशन ज़्यादा फ्रूट्स और सीड्स प्रोड्यूस करती है। इस तरह ये प्लांट्स लार्ज माइस पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं। माइस की बढ़ती हुई तादाद ओल्स के लिए मेजर फूड सोर्स बनती है। रैबिट पॉपुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है और ये प्राइमरी कंज्यूमर्स दोबारा से ओल्स के लिए फूड सोर्स बन जाते हैं। इस तरह नेचर बैलेंस मेंटेन करती है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।